the first question, so you guys can start solving it and then let me know when you're done. So guys, I'm hoping आप लोगों में से किसी ने solve कर लिया होगा. So if any of you wants to let me know कि कैसे करना है, वरना I'll just go forward. अपना hand raise कर लेना, so then I know कि किसी को बताना है. So a box contains 10 cups, 4 red and 6 blue. ठीक है, this is the first box. इसमें 4 red हैं and then 6 blue हैं. And then a second box contains 16 red cups and unknown number of blue cups, तो हम उसे X बोल देते हैं, X blue cups. A single cup is drawn from each box. The probability that both cups are the same color is 0.44. So either both the cups will be red or both will be blue. And इसकी probability है 0.44. So अगर हम first box से red लेंगे तो उसकी है 4/10. And then second box से है 16/16 plus x, क्योंकि हमें पता नहीं है कि टोटल कितनी बॉल्स हैं, सॉरी कप्स हैं. And then second वाले में से we'll have 6/10 blue cups and then x out of 16 plus x. This is equals to 0.44. Okay, yeah, Hafsa, you're right. But अच्छा also अच्छा हम इस पे एंड पे भी आ जाते हैं. So अगर किसी को कोई स्टेप में प्रॉब्लम थी, so they'll know. Then we'll cross. अच्छा, we can take 1/10 16 plus x common, and यहाँ पे we can multiply 4 into 16, and I think that's 64 plus 6x and 0.44. And then हम इस वाली साइड को इधर शिफ्ट कर देंगे and we'll solve for x, and x yes will turn out to be 4. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? Then we'll move on to the second question. Okay, going forward, this is the second question. I'll give you guys 2 minutes to solve it. Yeah, Mariam, you're saying something? Okay, no. So आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो and then 2 minutes बाद we can solve it together.
Okay, so two fair dice are rolled. What is the conditional probability that at least one lands on six, given that the dice land on different numbers? Okay, so P, the first one, yeah, any one of them lands on six, given that both dice land on different numbers. This diff is for different. ठीक है. So first तो हम यहाँ पे लेते हैं intersection and then इधर different की probability. First die can land on any number, so it's like 6 out of 6 opportunities and the choices, so it's basically one, and then the second can land on 5 out of 6. ये हमारा denominator है. And then ऊपर numerator में either the first one is 6 and second one is not equal to 6, or the first one is not equal to 6 and the second one is equal to 6. तो हम इसकी probability निकालेंगे 1 out of 6 into 5/6 plus 1/6 into 5/6 over 5/6. तो इसका आंसर आएगा 1/3. अगर किसी को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क. श्योर हमशा. तो हमारे पास दो डाइस जो हैं वो रोल हुए हैं. अब उन्होंने बोला है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है बेस्ड अपॉन कि दोनों डाइसेस पे डिफरेंट नंबर आए हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक डाइस पे 6 आया था. सो 6 या तो पहले डाइस पे आ सकता था या सेकंड डाइस पे. सो पहले तो हमें पता है डिनोमिनेटर में हम लेंगे कि दोनों डिफरेंट आए थे. तो फर्स्ट वाला जो है इट कैन बी एनी नंबर आउट ऑफ द 6 numbers, so it's basically 6 out of 6 choices you have which is equals to 1. And then the second dice है उस पे जो different number आने हैं, it can't be the number that came first. तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 आ गया था तो अब 1 के अलावा 5 जो नंबर्स हैं उनमें से कुछ आएगा. सो दिस बिकम्स आवर डिनोमिनेटर. एंड देन इन द न्यूमरेटर वी हैव टू चॉइसेस कि फर्स्ट वाले डाई पे आ गया था 6, तो अब सेकंड वाले डाइस पे 6 के अलावा कुछ भी आ सकता है आउट ऑफ द 5 नंबर्स, या फिर फर्स्ट वाले पे कोई भी नंबर, सॉरी ओके, और यू कैन लाइक जस्ट स्विच इट 5/6 में, एंड देन सेकंड वाले पे 6 आ गया तो पहले जो थे उनमें किसी पे भी 6 नहीं आया था, बाकी के 5 नंबर्स में से कुछ आया था. सो दैट्स व्हाई वी गेट दिस एंड दिस. इसमें डिनोमिनेटर वाली टर्म भी इसी तरह ऐड नहीं होनी चाहिए, जैसे 6/6 टाइम्स 5/6 और फिर प्लस करें 5/6 टाइम्स 6/6. अच्छा नहीं, बिकॉज इन द न्यूमरेटर में यू आर टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इवेंट्स के पहला तो कि एक 6 आया है और बाकी दूसरा डाइस डिफरेंट है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वी टेक द थिंग दैट्स गिवन द प्रोबेबिलिटी that both the dices are different. So this counts for one dice and this counts for the second dice. Is that clear? Yeah, matlab still you have some confusion. पहले डाइस के लिए हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, दूसरे डाइस के लिए 5 ऑप्शंस हैं. ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी इंट्यूशन डेवलप करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन आई डू गेट द पॉइंट. Okay, if you want, I can go over it again. I guess किसी और तरह समझाने की कोशिश कर सकती हूँ. अच्छा, पहले वाले में ना द ऑर्डर इज, ऊपर जो है ना हमें पता करना है कि 6 पहले आया या सेकंड में आया है, ये दोनों चॉइसेस काउंट. नीचे वाले में आर ओनली कंसर्न इज के एक में 6, एक में कुछ भी आ गया है, बस दूसरे में वो नंबर नहीं आया है. ऐसे ही है. Okay, so I guess we'll move on to the next question, this one, and you guys can try solving this and then we'll, I guess 2 minute बाद we can continue वापस से.
Okay guys, तो हम सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं. Probability of A union B का formula when we open it up is probability of A plus probability of B minus the probability of their intersection. And ये हमें बताया हुआ है इन्होंने यहाँ पे. And then probability of A union B complement, same probability of A plus probability of B complement minus B. ओके. सो अब जो है हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये दोनों साइड्स भी ऐड हो जाएंगी. Since we know probability of A union B is 0.7 and A union B complement is 0.9, 2 times probability of A, ये दोनों. आपने वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए. Sorry, yeah. And then probability of B plus probability of B complement minus probability of A B complement minus probability of A B. Okay, so probability of B plus probability of B complement has a total of 1 क्योंकि अगर हम set diagram draw करें and अगर ये B है, so first this is B and then rest all of this is B complement. So this is equal to 1. So we get 2 times probability of A plus 1 minus probability. अच्छा okay. And अब ये वाली जो term है, this is equal to probability of A. इसको मैं draw करके बता देती हूँ. A and B. Intersection of A with B, ये वाली term जो है, it's this one. And then intersection of A with B complement is this one. तो ये पूरा as a whole probability of A हो गई है. And its intersection not union, इसलिए बाहर का area we are not counting. So we get probability of A. This minus this is probability of A plus 1 is equals to this value, which is 1.6. And then probability of A is equal to 0.6. किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये लास्ट टू टर्म्स जो हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी, जी. ये प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर. ओके. अच्छा, ये अगर हमारे पास A और B है, पहला जो है A इंटरसेक्शन B, ये वाला टर्म इज दिस, राइट? यहाँ पे A और B इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एंड देन द नेक्स्ट टर्म A इंटरसेक्शन B अब B कॉम्प्लीमेंट जो है ना, ये सारी चीजें, लेकिन इंटरसेक्शन विद A जो है सिर्फ A बिकॉज ये वाला पार्ट है, तो ये वाली चीज है. तो अब ये वाला ग्रीन पार्ट एंड ये वाला रेड पार्ट मेक अप द प्रोबेबिलिटी ऑफ A. दैट्स व्हाई वी गॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A है. ठीक है. अच्छा, इसको कुछ लॉज भी हमने पढ़े थे, क्या कहते थे उनको, अगर इनको एक्सपेंड करें और इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द वेन डायग्राम. अच्छा, पहले तो हमने वेन डायग्राम तो मैंने इसलिए ड्रॉ करी थी सो इट्स इजी फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड, वरना हम ये जो हमने रूल्स पढ़े हुए, जब ये वाला एंड ये वाला ओपन अप होता है तो हमारे पास ये दो रूल्स आ गए. अब हमको पता है कि हमें एक्सट्रैक्ट ये वाला पार्ट करना है एंड ऑल दीज पार्ट्स कैन बी सॉल्व. हमें पता है जैसे ये दोनों मिलके वन हो जाएंगे, तो हम इसको आइसोलेट करके, ये हमें दिया हुआ है, वी जस्ट सॉल्व दीज लाइक दीज टू फॉर्मूलाज टू गेट द आंसर. तो वेन डायग्राम बनाना जरूरी भी नहीं है. इज दैट क्लियर? आप लोग जो, आई थिंक आप जो फॉर्मूला की बात कर रहे हो ना, वो दो जो फॉर्मूलाज होते हैं वो जो बहुत सारे सेट्स पे लग रहे होते हैं वो वाले हैं. ये सिंपल, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है टू अप्लाई दैट. Okay guys, so we'll move on to the fourth question. ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. So I guess you guys can take a minute for the first part and then we'll start.
Okay, guys. So Ariel has invited 6 guests to her birthday party, and she wants to change the seating every half an hour until she gets every seating. Okay. So अगर ये Ariel है, and then ये बाकी के लोग हैं 6, 3, 4, 5, 6, and अब this is the first place. अब यहाँ पे out of the 6 कोई भी लोग बैठ सकते हैं. So we have 6 choices. Then इस जगह पे कोई भी 5 लोग बैठ सकते हैं because the first one is already seated. And then we go on. यहाँ 4 बैठ सकते हैं, 3, 2, and then 1. So we have 6 factorial for the choices. And ये जो है seating every half an hour change हो रही है. तो अगर अच्छा ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आई थिंक हमने ओ लेवल्स में या उससे पहले पढ़ा होगा. अगर हाफ एन आवर में एक सीटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल है, सो 6 फैक्टोरियल सीटिंग अरेंजमेंट कितने मिनट्स में पॉसिबल होंगी? यू कैन यूज दिस क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट 30 into 6 factorial. I wait, let me check this answer. Into 30. Okay, so it's 21,600 minutes. Isko you can divide it by the number of hours in a day, which is 24. Or okay, sorry, the number of minutes in a day. I'm so sorry. How did you get the value 30? ये वाली यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली मेंशन किया हुआ है कि एवरी हाफ एन आवर दे चेंज द सीटिंग अरेंजमेंट. तो पहले हाफ एन आवर, पहले 30 मिनट्स एक अरेंजमेंट है, एंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल 6 फैक्टोरियल है. सो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स अगर मैंने 30 मिनट्स लिया था, सो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स इज दिस मच. अब इसको वी कैन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मिनट्स इन अ डे, विच इज 24 into 60 equal to 1440. And when you divide 21,600 by 1440, you'll get 15 days for all the possible arrangements to take place at the table. Okay. For the next part, in how many ways can these people be seated at the table if Ariel too can sit anywhere? Okay, isme to we don't have to tell the time, we just have to tell the possible number of arrangements. Uber 6 factorial thing because Ariel was fixed, up she can also move, so it's 7 factorial, which is equal to 540. इसमें कोई problem है किसी को? Okay, part 3. Next, the crowd wants to dance. If you want to couple a boy and a girl for dance, how many different pairs are possible? ठीक है. We'll count the number of girls we have and the number of boys we have. We have Barb is a girl, Demi is a girl, Esther. Okay, I'm sorry. I don't think Barb is a girl. I think it's a boy. And Cole is a boy. Frank is a boy, Gavin is a boy, and Ariel is a girl. तो हमारे पास 3 girls हैं and हमारे पास 4 boys हैं. So we can either do जो हम basic counting principle भी करते हैं, and we can multiply the number of boys and the number of girls to get 12, or same चीज के we choose one boy from the boys and one girl from the girls and we still get the same answer, 12. Okay, moving forward. अगर किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो you can ask me again. Decide to pool their resources and win the lottery. All they have to do is buy enough tickets so that no matter what they draw, they will have a ticket with the winning numbers. Okay, so 100% chance of winning. वो चाह रहे हैं कि वो इतने टिकट खरीद लें कि जो भी नंबर आए, they'll win something. And how many tickets do they need if each ticket contains a combination of 5 numbers from 90 numbers? अच्छा, ये सब क्वेश्चन थोड़ी लंबी कर रहा है. We just have to answer. It's a combination का question. Out of 90 numbers, कोई भी 5 का combination होगा and we'll get our answer. I think it's 43, 949, 268. And
Okay, this is the second last part. इसके बाद eventually they decide to play cards instead. Okay, and चार लोगों ने cards खेले हैं, where Cole points out that he had the same hand last time. What is the probability that Cole had the same hand twice in a row? ठीक है, so same hand means उसको first time Cole को जो cards मिले थे 13 exact, अब अभी भी उसको वही मिले हैं. तो can anybody tell me अगर आप लोगों ने solve कर लिया है कि how do we go about this? Okay, I'll solve it. So we have basically Cole can sample space ये है कि Cole के 52 में से कोई भी 13 cards हो सकते हैं. So I think it's 6 3 5 0 1 3 5 5 9 600. अब कोल को जो है कोई जो अगर हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं ऑफ द कार्ड्स इट कैन बी दिस. अब फर्स्ट टाइम में कोल के पास कुछ भी आ सकता है. इट्स द सेम थिंग जो हमने ऊपर की थी डाइस के लिए कि आउट ऑफ द 6 चॉइसेस कोई भी 6 चॉइसेस आ सकती हैं. तो फर्स्ट टाइम ही कुड हैव गॉटन like 52 C13 out of 52 C13 अगर हम probability निकाल रहे हैं total sample space and all the choices he has in the first बारी and then in second turn उसका अब जो आ गया था ना फर्स्ट टाइम में वो कॉम्बिनेशन फिक्स हो गया. So out of the 52 C13 he got the same one combination he got the first time. And I think yeah, that's the answer. Okay guys, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो I'll move on to the last part of this question. Which is this one. इसकी पहली टर्न थोड़ी सी रिपीट कर दें. लास्ट टर्म जो है 1 आउट ऑफ 52 C13 इज फाइन क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक आउटकम सिलेक्ट करनी है फ्रॉम ऑल द आउटकम्स. बट जो फर्स्ट टर्म है जिसमें 52 C13 डिवाइड बाय 52 C13 किया आपने, ये क्यों किया? अच्छा, जब जो फर्स्ट दफा कार्ड उठा रहे हैं ना सो इट डजेंट मैटर उसके पास क्या. उसके पास फॉर एग्जांपल अगर कोई 1000 चॉइसेस थी कार्ड उठाने की तो फर्स्ट टाइम में आउट ऑफ द 1000 ही कैन चूज कोई सा भी कॉम्बिनेशन. ही हैज पूरा फ्रीडम. अब जब एक इसीलिए ही हैज ऑल द चॉइसेस तो फर्स्ट वाली चीज सॉर्ट ऑफ बिकम्स फिक्स्ड, जस्ट बिकम्स वन कि जो भी मैंने चूज कर लिया अब वो हो गया है. एंड देन आउट ऑफ ऑल द चॉइसेस दैट आई हैड वो वन कैरीज ऑन हेयर बिकॉज ये वाला यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ फिक्स्ड थिंग जो अब मैंने निकाल लिया है. तो इट डजेंट काउंट कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी क्योंकि अब ये मैंने ले लिया है, सब कुछ में से ले सकती थी मैं. एंड अब इसके बाद ये वाली जो चीज फिक्स हो गई है बाकी चॉइसेस में अगली दफा भी मेरे पास यही आई है. इट्स लाइक अगर व्हेन यू गाइस डू अ बर्थ आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव लेकिन अगर बर्थडे क्वेश्चन करते हैं सो फर्स्ट इंसान के पास चॉइस होती है आउट ऑफ द 365 days they can pick any of the days so it's always 365 over 365 and the first one just becomes one because it's a fixed thing. अब इसके आगे होना है जो भी होना है. We are just doing फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो वैलिड केसेस हैं वो कंप्लीट सैंपल स्पेस है. हाँ हाँ फर्स्ट में हमने तुम कोई restriction नहीं लगाई. अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और उसमें कहते हैं कि टू पर्टिकुलर डेक्स जो हैं वो सीक्वेंस में आए हैं तो पहले की भी 1 आउट ऑफ 52 C13 हो जाती है और फिर टाइम्स सेकंड की भी मतलब ये ट्वाइस हो जाती फिर. यप अगर वो कहता है कि 3 times सेम ही आया है तो फर्स्ट टाइम पहला तो हमने चूज कर लिया एंड देन ये एंड देन इट रिपीट्स. यप okay and then this is the last part of this question. अच्छा गाइस ये मीटिंग ना 40 minutes में खत्म होनी है सो हमारे क्वेश्चंस इसके बाद आई थिंक 2 और हैं एंड अगर वो नहीं खत्म होते तो यू गाइस कैन रीजॉइन. ये एंड हो जाएगी तो okay. Finally the 6 guests decide to play chess. Ariel just wants to watch, set up the 3 boards and how many ways can the guests be matched with each other if it should not. Okay, so हमारे पास 3 chess boards हैं और उस पे 1 2 3 4 5 6 लोग खेलने वाले हैं. So अभी बगैर रिस्ट्रिक्शन के 6 factorial arrangements possible हैं.
लेकिन फर्स्ट पार्ट कह रहा है इट शुड नॉट काउंट एज अ डिफरेंट पेयरिंग if two people at the same board switch places. तो अगर 1 or 2 या 3 or 4 या 5 or 6 places switch करते हैं, it should not count as another arrangement. तो we'll do 2 factorial से divide कर देंगे because it's a repetition then for all the boards. पहले board के लिए, second board के लिए and third board के लिए. And it shouldn't matter which pair sits at which board. तो इस 6 फैक्टोरियल में एक 3 फैक्टोरियल फॉर अगर ये लोग स्विच कर लें प्लेस यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, बट सेकंड पार्ट कह रहा है इट डजंट मैटर, सो हमें 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा एंड दैट विल बी आवर आंसर. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? Can you please repeat 3 factorial वाला point? श्योर. अच्छा, ये 3 टेस्ट टेबल्स है ना. अब अगर 6 फैक्टोरियल में फ्री ऑल द अरेंजमेंट्स वर देयर, तो अगर ये 1 और 2 यहाँ चले जाते 5 और 6 की जगह या 3 और 4 की जगह, तो वो भी एक नई अरेंजमेंट काउंट होती. बट हमें क्वेश्चन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इट शुड नॉट काउंट एज एन अरेंजमेंट. अगर कोई भी 2 लोग अपना बोर्ड स्विच कर लेते हैं, ये लोग इधर चले जाते हैं या इधर चले जाते हैं, तो ये जो 3 फैक्टोरियल की अरेंजमेंट थी हमारे पास पॉसिबल, हमें उसको भी उसमें से रिड्यूस करना है. So it's a repetition. अगर ये यहाँ आए, for me it's just the same arrangement. इसलिए I have to divide by 3 factorial. Okay, thank you. No problem. Okay guys, and then we have the fifth. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा इसमें. Yeah. It should not count as different pairing if 2 people at the same board switches places. Yeah. तो ये एक बोर्ड की बात हो रही है ना? या फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक बोर्ड के लिए हो रही है. फॉर अब लेकिन 3 बोर्ड्स है ना, तो पहले बोर्ड के लिए 1 और 2 इधर इधर चले जाएं, डजंट मैटर. तो 2 फैक्टोरियल फॉर द फर्स्ट बोर्ड एंड देन 2 फैक्टोरियल सेम. अगर 3 4 इधर उधर चले जाएं इट शुडंट मैटर. 5 और 6 चले जाएं इट शुडंट मैटर. तो 2 फैक्टोरियल फॉर ईच बोर्ड है. इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीनोमियल फॉर्मूला जो है हमारे पास 6 फैक्टोरियल, हमारे पास 6 जो है ना गेस्ट्स हैं टोटल, तो हम इनको 2 2 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं. इसमें वो मल्टीनोमियल फॉर्मूला आपको 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल वाली टर्म दे देगा. और इसके अलावा फिर आपने ये भी देखना है कि इनकी अरेंजमेंट कि पहले ग्रुप में कौन 2 लोग थे, अगले ग्रुप में कौन थे, और इस तरह थर्ड ग्रुप में भी, तो वो टाइम्स 3 फैक्टोरियल है, राइट? या बिकॉज जो भी पहला ग्रुप था वो दूसरा ग्रुप भी हो सकता था या वो तीसरा भी हो सकता था, इसलिए हमने वो पॉसिबिलिटी भी हटा दी बिकॉज इट डजंट मैटर. हाँ, लेकिन आपने जो नीचे डिवाइड की है 3 फैक्टोरियल वाली टर्म, ये तो ऊपर अगर 3 फैक्टोरियल होगा तो उससे कैंसिल आउट होगी ना? अच्छा, ये जो 6 फैक्टोरियल है ना, इसमें सब अरेंजमेंट पॉसिबल है. ये 3 फैक्टोरियल इसके अंदर है. अगर जैसे इफ वी वर सीटिंग अप पीपल 6 होते हैं यहाँ पे, तो हम 6 फैक्टोरियल करते, पहले पे कोई भी आ जाता है, यहाँ भी कोई आ जाता, तो इसके अंदर ना ये सब पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी हैं. लेकिन हमें ये सब पॉसिबिलिटीज नहीं चाहिए. हमें सिर्फ ये चाहिए कि यहाँ पे लोग आ गए, यहाँ पे लोग आ गए, यहाँ पे लोग आ गए, एंड दैट्स इट. मतलब am I making sense? या अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है? मल्टीनोमियल जो फॉर्मूला है हमारे पास, या इसी तरह ही डिफाइन करते हैं ना कि आपके पास n फैक्टोरियल है, एंड डिनोमिनेटर में आपने n-1 या जितना भी आप ग्रुप्स बना रही हैं वो सारे ग्रुप्स नीचे डिनोमिनेटर में आ जाते हैं. ऐसे ही है. तो 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल, ये हमें ये बता रही है चीज कि 6 गेस्ट्स को आप 2 2 के पेयर्स में कितने पॉसिबल वेज हैं डिवाइड कर सकते हैं. नहीं, ये हमें ये नहीं बता रहा है. देखो, ये जो ऊपर न्यूमरेटर है ना, ये तो तुम्हें पहले फ्री चॉइसेस बता रहे हैं कि कितनी है, एंड देन इसमें एक चॉइस थी कि पहले ये 2 लोग जो हैं ये इधर उधर चले जाते, तो ये एक चॉइस काउंट होती. इसके अंदर थी वो चॉइस, लेकिन हमें वो चॉइस नहीं चाहिए बिकॉज हमारे लिए सेम है कि 1 इधर बैठे या इधर बैठे, इसलिए हम डिवाइड करके वो पॉसिबिलिटी हटा रहे हैं. इट्स अ रेपिटेशन फॉर अस, इसलिए हम उसे रिमूव कर रहे हैं. ये लेकिन ये ऑप्शन नहीं बता रहा कि 2 2 के ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया है. चीज ही हो जाती है ना, क्योंकि आप एक तरह से एनसीआर की एक एक्सटेंशन ही है मल्टीनोमियल रूल जो है, कि आप एनसीआर में आर ग्रुप्स कर रहे होते हैं, लेकिन आप बाकी अगर आप इकट्ठे ग्रुप्स चेक करना चाहें तो आपके पास एक जेनेरिक
फॉर्मूला जो है वो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय ग्रुप्स के इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स उनके प्रोडक्ट्स हैं। यप तो यप ये वाली जो टर्म है 6/222, ये तो चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को ही डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कर रही हैं तो वो सेंस नहीं बन रही। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर लेती कि मैं 6 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 कर लेती ना, तो अब जो भी मेरे पास आंसर, बल्कि मैं निकाल ही लेती हूँ, वेट। अच्छा, अगर 90 आंसर आ रहा है, अब इस आंसर में ये वाला तो हट गया कि 1 यहाँ बैठा था, 2 यहाँ बैठा था, या 4 यहाँ बैठा था, 3 यहाँ बैठा था, ये सब चॉइसेस हट गई हैं। लेकिन इसमें अभी भी वो चॉइसेस हैं कि 1 और 2 इस बोर्ड की जगह इस बोर्ड पे चले गए या इस बोर्ड पे चले गए, क्योंकि अभी इस ग्रुप के पास 3 फैक्टोरियल चॉइसेस हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली। बट हमें ये वाली बात भी नहीं मैटर करती, इसलिए हम अब जो आंसर आया फर्दर इसको इसमें से ये वाली चीज भी रिड्यूस करना चाह रहे हैं। कौन अपने तीनों लोग अपने मतलब तीनों ग्रुप्स अपने बोर्ड स्विच करके जो अरेंजमेंट्स बना लें वो भी हमें मैटर नहीं कर रही है, इसलिए हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये 90 किसका आंसर आया है? 720/8 90 है। 90 ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है, सेकंड हमने अप्लाई नहीं किया हुआ, तो 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल का क्यूब। मुझे एक्चुअली कंफ्यूजन ये हो रही है कि 90 जो हमने आंसर निकाला है ना, ये सेकंड पार्ट को इंक्लूड करके ही है, और अगर हम इसको एक्सक्लूड करें तो हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालने के लिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, अगर आप फर्स्ट पार्ट को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो 90 को, तो आप और चॉइसेस ला रहे हो जो अभी ना 6 फैक्टोरियल में ये चॉइस इंक्लूडेड है कि 3 लोग अपना बोर्ड स्विच कर लें। तो अगर आप एक और दफा 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो और कोई चीज नहीं है जिसके लिए हम और अरेंजमेंट बना रहे हैं, वो अरेंजमेंट थी इसमें ऑलरेडी। फर्स्ट के आंसर, फर्स्ट का अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना सबसे पहले कि कोई भी कहीं पे भी बैठ सकता है, तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल चॉइस है। एंड देन फर्स्ट, और फिर जब ये पार्ट आके हमें बोलता है कि इट डजेंट मैटर, तो हमने अब ये वाली चॉइस हटा दी, तो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है अभी 90 में इंक्लूडेड है, मतलब इट डज मैटर राइट नाउ कि विच पेयर सिट्स एट विच बोर्ड, बट अब इट शुड नॉट मैटर, इसलिए हमने इस 90 को भी इसमें से भी ये वाला ऑप्शन हटा दिया जो इसमें पहले इंक्लूडेड था। चलो मैं इफ यू इसको देखूंगा बाद में दोबारा। नहीं, इफ यू वांट, ये जब ट्यूटोरियल ओवर हो जाएगा ना, आई कैन एक्सप्लेन यू मोर, जब ये वाला पूरा बाकी सब का भी सॉल्व हो जाएगा ना। ओके, सो देन वी हैव दिस क्वेश्चन। अच्छा, आई एम प्रीटी श्योर क्लास एंड होने वाली होगी, तो अगर इफ इट हैपेंस प्लीज ज्वाइन अगेन, एंड इन द मीन टाइम यू गाइस कैन सॉल्व दिस वन। ये वाला रिलेटिवली इजी है, ये दोनों लास्ट जो हैं ये बहुत इजी हैं।
Yes, Arij, you're right. This is the answer. So, acha, let's solve it. We want the percentage of the group that watched none of the three sports. So it's probability of G union B union S ka complement. This is what we want to know, which is the same thing as 1 minus probability of G union B union S. Acha, यहाँ पे G is for gymnastic, B is for baseball, and C for soccer. So, yeah. अच्छा, इन्होंने आपको इंडिविजुअली हर चीज की प्रोबेबिलिटी दी हुई है एंड हर दो चीजों के यूनियन की भी दी हुई है एंड फॉर द थ्री स्पोर्ट्स भी दी हुई है. सो यू जस्ट हैव टू प्लग इन द फॉर्मूला, बट इफ यू वांट इट कैन आल्सो बी सॉल्व विद वेन डायग्राम अगर समझने में प्रॉब्लम होगी. सो अभी आई विल सॉल्व विद द फॉर्मूला, बट अगर किसी को नहीं समझ आता है तो आई विल ड्रॉ द वेन डायग्राम एज वेल. सो इट इज 1 is equals to minus probability of G plus probability of baseball. And then we start subtracting the intersections. And then we add the तीनों का intersection. So probability of gymnastic is 0.28 plus for baseball it is 0.29, for soccer it is 0.19, and then we subtract. Which is 52%. इसमें कोई problem है किसी को? We have just applied the basic rule, but I can also draw the Venn diagram अगर कोई problem है. ठीक है, so we'll move on to the last question. It's this one. क्विज़ेस में आंसर जो है हमने फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म ही सिर्फ एक्सेप्टेबल होती है कि अगर हम इसको इस फॉर्म तक लिए हैं, फॉर एग्जांपल हम 14 फैक्टोरियल या आंसर लिखना ज़रूरी होता है? अच्छा, एक्चुअली क्विज़ेस में सिंपलेस्ट आंसर भी चलता है. अगर जैसे फ्रैक्शन है तो यू कैन ऑब्वियसली सिंप्लीफाई, बट उसके अलावा जो एग्जैक्ट आंसर आया है 14C करके, या अगर सर ने मेंशन किया हुआ है कि टू डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ट्राई कीपिंग इट टू दैट, वरना फिर योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड. मतलब ये मैनुअली चेक होने ना, इतना तो नहीं है कि क्विज़ेस वो ऑटोमेटिकली आपने स्कीम अंदर डाली हुई और उसी में उसी वक्त ही ग्रेड हो जाना है? नहीं, ये चेक तो LMS पे ही होते हैं, बट फॉरन आपके पास रिलीज नहीं होता, बिकॉज अगर कोई एरर हो गया है तो वी जस्ट वंस गो थ्रू इट मैन्युअली. अगर किसी का आंसर में कोई डेसिमल का हो गया है या कोई LMS ने एक्सेप्ट नहीं किया एक फॉर्म बट इट वाज राइट, तो वो चेक होता है एंड देन यू गाइस गेट द स्कोर. बट या चेक वो ऑटोमेटिकली यूजुअली हो जाते हैं. Okay, for the last, अच्छा, okay, I'll draw. एक second. ठीक है. Probability for, अच्छा पहले जो है ना 8% of the people watch all 3 sports, so ये वाला is 8% जिसमें तीनों common है. Then we have कि gymnastic and soccer जो हैं वो 10% of the people, ठीक है, it's here, but 10% में this 8% is included, so we subtract 10 में से 8%, which means सिर्फ जो gymnastic और soccer कर रहे हैं वो 2% है. इसी तरह then we have 12% for baseball and soccer.
So this and this, and 12 में से we subtract 8, so it's 4, क्योंकि ये सब plus करके 12 और plus करके 6 बन रहा है. And then we have 14% for gymnastic and baseball. 14 minus 8 is 6, तो ये 6. And then individual का हम fill करेंगे. Soccer के 19 है, but we already have 8 plus 2 plus 4, 14, so this is just 5%. Similarly, 29 baseball के हैं, and we'll subtract 18 from 29, so I think 11. And then last है 28% of gymnastic. So again हम लोग 16 minus कर लेंगे from 28, so it should be 12. And then अब ये सब लोग हैं जो कुछ ना कुछ ज़रूर खेलते हैं, and you want to know कि यहाँ कौन से लोग लाए करते हैं, तो 100% में से you can subtract all these, इनको add करके you can just subtract them and you'll get 52%, unless मैंने कोई यहाँ पे subtraction में या summation में error कर दिया है. So it should be 10, 20, 30, 43, 48. Yep, सही है. इन सबको प्लस कर लेना है इंडिविजुअली, आप क्योंकि ये नंबर सिर्फ अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी को रेफर कर रहे हैं, एंड देन विल गेट 52%. Okay, okay, and this is the last one. It's similar to the one above. Okay, probability of playing piano is 0.28, of guitar is 0.07, and playing both is 0.05. What percentage of men neither play piano and nor guitar? अच्छा same, फिर हमें जो है complement चाहिए of this, which is, अब इसके लिए we can just apply the formula जो हम use करते हुए आते हैं, 0.28 plus 0.07 minus 0.05. So we'll get 1 minus 7 plus 0.28 minus 0.5, which is 70%. And for part B, we have to know okay, it's play guitar but not piano. Sorry, piano. So अगर गिटार का ये है and piano का ये है, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, तो हम probability of guitar में से minus intersection कर देंगे of probability of guitar and piano. So we'll have 0.7 minus, sorry, 0.07, 0.05 is equal to 0.02. Yep. So ये 2% होगा.